Mr. Arvind Kejriwal refused to appear in front of the Enforcement Directorate today. He sent them a reply saying that your notice, that is your summons, sorry, not a notice, it's not a notice, it's a summons. The summons itself is illegal, that's what he has said. And instead he decided to do a roadshow in Singrauli along with the Punjab Chief Minister, Mr. Bhagwant Mann. Very, very successful roadshow, by the way. People turned up in huge numbers. I think the speculation was that perhaps they're going to pick him up from there. No, nothing of that sort happened. However, the Aam Aadmi Party leadership, Pradeep ji, says that in all likelihood Arvind will be arrested. That's what they say. Let's ask Meenal Jain. I think Meenal Jain is with us from the Aam Aadmi Party. Meenal ji, namaskar. 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 Vande Mataram, ma'am. Vande Mataram. Vande Mataram. Sorry to keep you waiting. I hope you don't mind. लेकिन आज अरविंद जी नहीं गए, उनको समझ दिया गया था, उन्होंने जवाब दे दिया, उनका भाई मैं कन्वीनर हूँ पार्टी का और मेरी गाइडेंस के अंडर ये सब काम हो रहा है, तो आप एक तो अपना नोटिस विड्रॉ करें जो वैसे ही गैर कानूनी है, और उसके अलावा अभी भी 3 जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के तीनों अभी भी जेल में हैं, और उसके अलावा आई थिंक देयर हैज बीन वन मोर couple of other raids have happened on that I can't hear anything. Hello. Can you hear me, ma'am? Yeah, now I can hear. You can hear me? Good. Yeah. So what I want to know is, what is the next step? Arvind has not gone to the ED's office. What happens now? Meenal ji. So Arvind definitely doesn't want to appear in front of ED because he thinks this is absolute a political vendetta and BJP is all out to kill Aam Aadmi Party, Ji. which is a very new phenomenon in politics, Indian politics. And we all come from a non-political background and we have reached up to here and we became a national party. And BJP is all out to kill our party. So which Arvind ji, I think what he did today was absolute in protest that we don't agree with whatever your ED is doing or whatever ED is doing at the behest of BJP. It is not legal because they are just going after one after the other leader of Aam Aadmi Party and putting them behind bars. And the reason is very clear because BJP sees them as a threat. They don't see any other party as a threat, but they see Aam Aadmi Party as a threat. Because if they go full on campaigning in Lok Sabha or the state elections, which are just round the corner, so it will be definitely be a deterrent for BJP, which is anyway losing the elections. Pradeep ji. How do you see this? Do you think when Rahul Gandhi said that minorities are being targeted, opposition is being targeted, judiciary is being intimidated, there's an increase in right-wing activism, democracy is in danger, Loktantra khatre mein hai, that was what Rahul Gandhi was saying, and then it was all echoed by the India Alliance. Now this arbitrary attack on the opposition leaders. Now we had, your leaders being arrested, and the bigger cause was you were part of the India against corruption. You were fighting against corruption, and you suddenly find all your leaders going into the jail for corruption. And now they have surrounded Arvind Kejriwal ji, who was leading the entire Indian against corruption movement, movement. And now you have Raghav Chadda who comes up and shows that Apple has sent him a notification that state-sponsored attackers are behind snooping your phone or trying to hack your phone. How do you see this entire thing? लोकतंत्र का खतरे में है मीनल जी। लोकतंत्र तो खतरे में है ही है, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं भाजपा वाले, ये वो दिन दूर नहीं कि ये शायद चुनाव ही ना कराएं अगली बार। तो ये हो सकता है, ये वेरी मच पॉसिबल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डालें। तो हम लोगों को एज पीपल ऑफ दिस कंट्री, एज आम आदमी पार्टी, we stand with our constitution, and so today Arvindi refused to go and appear in front of ED. But I don't think they will leave him outside because he's become a threat to their victory. So they will definitely go behind them. And the Apple saga, which you all saw, Apple is such a reputed company, and they send letters to all the opposition leaders and journalists. I don't know whether any of you received that notification or not from Apple,
saying that somebody is trying to hack into your accounts, which is such a shameful thing. And above that, after Apple said this, the MEA today, the Minister of External Affairs, threatens Apple that we'll stop your Indian operations if you keep behaving like this. So the thing is, the democracy is definitely under threat, and Arvind is one of the warriors for democracy. And by putting Arvind behind bars, it becomes easier for BJP. So And I think, I think Aam Aadmi Party must be having a plan in case the most unwanted thing or things that should not be happening happens. If at all the government, the agencies of the government goes and arrests Arvind Kejriwal ji. Now you need to have plan B in place because you're fighting most of the elections in states also. In states also you are doing. It should not be that Arvind Kejriwal gone, the party collapses. Now how are the Karyakartas, how are the youth leaders, how are the state leaders, how are the district leaders? Have you all got together and planned for the inevitable in case it happens? yeah, we are very much in everything what is happening in Delhi. We are observing it very keenly and carefully. And the moment Arvind ji is behind bars, it's not that, if it's not about, this fight is not only about Arvind, it's about that thought process that जो बोलते हैं ना कि अरविंद खाली पार्टी नहीं है, the whole party is now Arvind Kejriwal. There are thousands of Arvind Kejriwals which have become like him and which can act like him. So he has prepared a lot of people who can take care of the party when he is not present. God forbid it happens, but we are very much prepared to handle everything when he is not there. No, fantastic. I mean, where any kind of things, where environment is concerned, we saw that Arvind Kejriwal acted the best. You control stubble burning. You control farm fires by 50%. Punjab is the greatest example. Delhi is also one of the greatest example. In short time, you really worked on things. You got all the unwanted, pollutions, that pollutants that was going in the air. You stopped it. And you also, talking about environment, created one particular thing where all the debris of Delhi was collected in one company, and from there you were reusing it, the entire thing, where people especially in Mumbai also, you find all these debris are thrown on the roads or the ponds or the water bodies and you fill it up. But here you had an innovative plan where a special company was formed where this entire debris was loaded and the entire product was made reusable. Kejriwal ji has been doing this. It's the only, I think, company in the whole of the country which is doing all these kind of activities. Environment, you're doing great. You're doing a great job controlling drug trafficking in Punjab, where it's a pioneer state, the first among the states really acting by law, also enforcement, also by the administrative process also. You have been doing everything right. But how are you going to move ahead? Because Congress is copying all your plans, copy paste करके पूरे 5 राज्यों में they are really building up like anything. Your Kalyan, Garib Kalyan Yojanas has been copy pasted by the Congress and they are moving ahead like victory for Congress in 5 states. That's the entire message that is going around. So how do you see development? आप बहुत कर रहे हो, but somebody else is taking the credit, Meenal ji. So, see, we cannot stop anybody from copying and pasting. That is like all over the place in any case. But copy paste करने से you can't implement the things. You can declare the thing कि we will build 1,000 schools, but just to build the infrastructure and put that motivation in the teachers to teach the students, to change the whole social fabric of the students who are coming in the school. So that is only possible with that kind of vision which only Arvind ji has. And that, by the way, is footage from Singrauli, where Arvind Kejriwal was today. Along with Bhagwan Maan ji. I don't think historically this has ever happened in the country. Can we see that again, please? Can we see that again? Ji, Meenal ji, boliye. Aap boliye, please. So we were that was very much expected out of Arvind ji, what we have seen him during the IAC days. So when there were like people and there were protests and police would attack the protesters with lathi and all. So we used to ask him,
what will happen, like to the volunteers, maybe they will get arrested. तो he told us one thing, that मैं सिर पे कफन बांध के निकला हूँ, जिसे साथ देना है वो आ जाए, जिसे नहीं देना वो घर पे बैठे. So we knew that this is Arvind, this is coming, like. So I don't know how this BJP government will take it, because 3 times they have to summon and then they have to arrest, or whatever that process is there. So the first summon, to of course, Arvind ji has absolutely rejected that I'm not going to appear because No, it he is has called the illegal. summons illegal. Yeah, he called the summon illegal and Gee. politically motivated. So why should he appear? There is no logic in what these people are doing. He's working for the people. He's doing such a good job. So you just want to. It's like a very transparent thing for people now to see. Everybody knows what is happening in the country. So now the people have to stand up, and Aam Aadmi Party definitely will stand for Arvind and be Arvind in absence of Arvind. तो जैसे पहले आप लोगों ने टोपियां बनाई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, मैं भी अन्ना, तो अब टोपियां बनेंगी मैं भी अरविंद. अगर अरविंद जी को अगर जेल में डाल देते हैं तो इज दैट द प्लान कि मैं भी अरविंद हर जगह मतलब जाएंगे? प्लान, वैसा कुछ प्लान नहीं है, बट आई थिंक दैट्स अ ऑब्वियस थिंग व्हिच इज इन आवर हार्ट्स, बिकॉज वी हैव सीन हिम वर्किंग फॉर द पीपल. एंड लेकिन आपको खुद क्या लगता है कि आपको लगता है कि यही स्पष्टीकरण है वास्तविकता में, यही एक्सप्लेनेशन है कि बीजेपी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, या फिर जो शराब की पॉलिसी आई उसमें कुछ गड़बड़ थी? और क्या आपको लगता है कहीं इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स के कहीं असल में कभी शक नहीं होता है कि क्या यार कहीं असल में करप्शन तो नहीं करी हमारे लीडर्स ने? कभी लगता है आपको ऐसा? हमारे यहाँ तो हर वॉलंटियर क्वेश्चन पूछता है. ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप होके बैठ जाते हैं कि भाई अदानी ने इतना पैसा खा लिया, मोदी जी इतना पैसा खा रहे हैं, तो अंधभक्त लगे पड़े हैं उनको बचाने के लिए. तो हमारे यहाँ तो कुछ होता है तो ट्विटर पे हम सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ. और इंटर पार्टी बहुत सारे डिस्कशन के इंटेलेक्चुअल लोगों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिनमें बहुत सारे IITians, डॉक्टर्स, मतलब बहुत ही काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं जो खुद क्वेश्चन पूछते हैं. और हमारी पार्टी एकदम ट्रांसपेरेंट डोनेशन पे चलती है. तो अगर हमारे डोनर्स या हमारे सपोर्टर्स को हम नहीं बता पाए कि ये पॉलिसी में कुछ गड़बड़ थी कि नहीं थी, तो हमें तो सारा सपोर्ट बंद हो जाएगा फाइनेंशियल. हमारा कोई डोनेशन वैसे नहीं है कि जो सीक्रेट डोनेशन आते हैं बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को. तो हमारा तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा अगर हम उनको रीजनिंग ना दे पाए. और हर एक्शन पे हमारे को हर जगह जवाब देना पड़ता है. तो अगर ऐसा कुछ होता, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो अभी जो आया है मनीष जी के बेल के समय, तो उसमें कहीं भी मतलब मनी ट्रेल नहीं पता इनको, ये नहीं पता पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ. सिर्फ आप एक इंडिविजुअल के जो अप्रूवर बना दिया, जिसे डरा धमका के बीजेपी ने, उस पे आप सारे लीडर्स. लेकिन एक चीज तो उसके खिलाफ जाती है ना मैडम, मीनल जैन जी, एक चीज तो खिलाफ जाती है ना कि पॉलिसी फिर अगर इतनी अच्छी थी तो चेंज क्यों करी आपने, फिर पुरानी पॉलिसी फिर रीइंट्रोड्यूस क्यों कर दी? इसी को लागू रखते, इसी को जारी रखते. भले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चीखते रहें, उछलते रहें, कूदते रहें, वैसे भी वो कूदते फांदते रहते हैं, उसमें नई बात क्या है. तो यही पॉलिसी अगर रखते तो ये पॉइंट तो खिलाफ जाता है ना कि पॉलिसी में जो नई शराब नीति थी उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से उसको बदलना पड़ा. मीनल जी, नहीं, गड़बड़ कुछ भी नहीं थी. उन्होंने जो वेंडर्स का जो भी परसेंटेज था या जो था वो चेंज करके उन्होंने वापस उसको पुराने उस पर ला दिया. तो इन्होंने पहले सोचा था कि जैसे जो पंजाब के या जो दिल्ली के वेंडर्स हैं, जो पुराने वेंडर्स हैं, उनकी एक तरह से मोनोपोली हो जाती है कि वही को हमेशा ठेका मिलता है, वही लोग हमेशा आते हैं. हमेशा उन्हीं को मिलता है जी. हाँ, तो उसको बदलने के लिए एक नए तरह से इन्होंने कोशिश की. इन्होंने काफी प्लान वर्कआउट किया, फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, क्या होगा. इनको लगा स्टेट को इससे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा. फिर ये सब होने लगा कि ये तो अपने इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ये कर रहे हैं. जो पुराने वेंडर्स थे वो भी काफी नाराज हो गए. तो फिर अरविंद जी ने सोचा कि पुरानी ही पॉलिसी ठीक है, इसी को हम वापस से ले आते हैं. I think that was a major point. Ji, Pradeep ji. Meenu ji, we are trying because we were always discussing. The people elect a government. They elect a government. The government decides the policies.
The government decides the policies, and if you have this kind of an atmosphere कि state government ने एक policy decide किया, change किया, amend किया, it has the powers to do it. Then suddenly you have scrutiny of that, you have CBI inquiry of that, and you challenge the entire policy. Now, entire the federal structure अपने constitution, everything is coming under एक कटघरे. This will be a landmark case where everything is affected because सरकार को हम किस लिए elect करते हैं? वो हमारे policies बनाए. और आज वही पॉलिसीज को आप चैलेंज करने लगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे हर पॉलिसीज को, देन व्हाट आर वी लुकिंग टुवर्ड्स? वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एनार्की. डोंट यू थिंक सो? आगे जाके इट्स गोइंग टू बी every government that is not a BJP government will be open to scrutiny. Any law they make, Parliament, Assembly is a place where you make laws for the state. Now, how are you going to? Don't you think after this there's going to be एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस होगा जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड? या एब्सोल्युटली. मतलब ये तो एक छोटा सा पॉलिसी था, कितना 300-400 करोड़ का ये लोग इल्जाम लगाए जा रहे हैं. मतलब हजारों करोड़, लाखों करोड़ आपने लोन्स राइट ऑफ कर दिए, लाखों करोड़ों का आपने पूरा G20 जो था उसमें अदानी के लिए MOU साइन हुए हैं. तो वो सारी चीजें आप कैसे उनको इग्नोर कर देती है ये गवर्नमेंट और ये जनता, जहां पर उनको दिखाई नहीं देता कोई अपने, जिन्होंने मोदी जी को लेके आया है वो तो उनको सवाल करना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. और ऐसे छोटे छोटे फैसले तो गवर्नमेंट के उस पर छोड़ देना चाहिए, पर इनको चाहिए कि बिना बात के आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ जाओ और इस पार्टी को खत्म करो, क्योंकि इन्हें पता है कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग. And we have become a third largest party after Gujarat elections, and we are a national party now, जो इनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा. और तो और छोड़िए, मतलब हाँ, बेचारे राघव चड्ढा जी का बंगला भी ले रहे हैं और उनको बोलते हैं एंड दे हैव सस्पेंडेड हिम इंडेफिनिटली. ये क्या होता है? ये मेरी समझ के बाहर है. एग्जैक्टली. नहीं, पहले भी संजय जी को जब भी उन्होंने अदानी के खिलाफ बोला, या राहुल गांधी जी को जब उन्होंने वो फोटो दिखा दिया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि आपने उनका भी घर ले लिया था, उनको सस्पेंड कर दिया इंडेफिनिट टाइम के लिए. मतलब आपने एक भी बार मणिपुर के ऊपर नहीं बोला, आपने एक भी बार अदानी पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. और सबको पता है, मतलब मेरे बहुत सारे स्टॉक मार्केट में दोस्त हैं जो इतना क्लियर दिख रहा है कि शेयर्स आर मैनिपुलेटेड, हिज फर्म्स आर मैनिपुलेटेड, हिज पी रेशियो इज सो हाई, बट स्टिल आप कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं करते और दूसरों को करप्ट करके चिल्लाते रहते हैं. मतलब ये तो हद से ज्यादा हो रहा है और लोगों को दिख रहा है. मेरे ख्याल से लोगों को दिख रहा है और ये वोट्स में इनके काफी नुकसान इनको भरना पड़ेगा. अब देखते हैं मतलब किस तरह से जनता देख पाती है इन चीजों को और किस तरह से इनका पॉपुलैरिटी कम होती है, क्योंकि इनको इतना अच्छा मौका मिला था कि ये पूरे मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी इनकी, मेजॉरिटेरियन, और इनके स्टेट्स में भी 17 स्टेट्स में इनकी सरकार थी एक समय, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा माइलस्टोन अचीव नहीं किया कि आपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे या किसी भी तरह का, सिर्फ एक रोड बना रहे जिसमें भी कैग ने बता दिया कि इतना करप्शन हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनाप शनाप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं. अभी मुंबई में कोस्टल रोड की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, एनवायरनमेंट को इतना बड़ा थ्रेट हो गया है, पर बना रहे हैं क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देना है, कमीशन खाना है, इनके लोग बुरी तरह से खाने पीने में लगे हुए हैं. तो अगर इस तरह से आप राजनीति चलाएंगे जिसमें देश की गरीब जनता और उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा और सिर्फ नफरत फैलाएंगे, तो ऐसी राजनीति इनको मुबारक हो. हम तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आएंगे तो लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, हर तरह से उनको अच्छी, जो एक लाइफस्टाइल जो एक बाहर के देश में जाता है तो गरीब आदमी भी अच्छी बसों में सफर कर पाता है, अच्छे स्कूलों में जा पाता है, अच्छे हेल्थ केयर होता है, वैसा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हर आदमी को मिले. क्या बात है सर, क्या बात है प्रदीप जी. That's fantastic. So you're not going to give up. The Aam Aadmi Party is not going to give up. Whatever the BJP tries, even if Kejriwal is arrested, you all will resurrect the Aam Aadmi Party. मीनल जी, इंशाल्लाह. हमारी तो यही ये है कि कभी ये देश के लिए हमारा मन से काम करने की नियत खत्म ना हो. जी, कहने का क्योंकि मतलब अरविंद एक विचारधारा है, उसको खत्म करना नामुमकिन है बीजेपी के लिए. कहने का मतलब ये हुआ
कि भले जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है, ना यही ना रहेगी। ना, सवाल ही नहीं उठता। क्या बात है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैम, ऑल द बेस्ट टू यू। द कंट्री नीड्स पीपल लाइक यू। थैंक यू। भारत देश को आप जैसे लोगों की बहुत बहुत सख्त आवश्यकता है। नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Well, that's just about it for tonight's show. आज की शो में इतना ही. Do we have any comments that we can I take? got about 4 comments they say. Do we have any comments? We do. All right. आप लोग जरा अगर चैनल को लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर अच्छा रहेगा, मतलब सबके लिए। और अगर वो बेल आइकन के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे तो जो हमारी नई वीडियोस हैं, पूरे दिन में जो नई नई वीडियोस आती हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और लेकिन हमने कमेंट ज़रूर भेजें, कमेंट्स आपके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। देखें प्रदीप जी। हाँ, और इस शो के बाद जरा कहीं जाइएगा नहीं, देयर इज अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम that Pradeep ji has done today. Pradeep ji, उसके बारे में जरा बताएं जरा। Yes. There was a huge demolition where Santa Cruz East, Prabhat Colony, just bank opposite Reliance building, that is Santa Cruz East. तो वहाँ पर लोग करीबन 60 साल के रह रहे हैं, करीबन 28 or 38 structures, 60 years old, and that has been demolished because that land has been allotted to Reliance Anil Ambani company, and Reliance Anil Ambani company owns that land, was given that land, and now you break these structures. Suddenly कौन सा year का cut off date है, nothing is properly explained to the people. That is what the people claim. And ये दुख भरी चीज़, किसी का घर टूटना after 60 years. I mean, you've seen 3 generations out there, and suddenly you allotted, then before having a proper survey being conducted, people being rehabilitated around the vicinity, और आप ऐसे तोड़ना with the use of force. Now this is something which we say, we met and talked to the people, and the people were explaining their grief कि अभी कहाँ जाएंगे, घर बेघर है, allotment हुआ है, वहाँ पर कहाँ पर there is no proper rehabilitation, food, water, electricity. I mean, this is something the government has to think about before And they have to wake up and give it to a company. That's So right. given 60 years old, I mean, people have been staying there for 60 years. Just as soon as we wind up the show, just after that you will see this, and this has been the story practically all over Mumbai, and we need to do something about it. Right, let's take a look at the comments. Zara comment दिखाएं. This I think is with regard to Mr. Nizamuddin Rain. Good statement from Darbhanga Zila Jamiatul Rain District President. User VL9DN8PX5P Jamiatul Rain. वो भी राइन है. चलिए. Priyanka Chopra stands in white floral sari at Jio Mami Mumbai Film Festival. The gorgeous Priyanka Chopra. खुद की कज़न की शादी में नहीं आई. बू बू. दीपा बिरजे. चलिए. प्रियंका जी परिणीति की शादी में नहीं आई. इनको याद है. Sunny Deol and Abbas Mastan to work together again in an action thriller. Can't wait to watch it. कासिम अली साहब लिखते हैं, कासिम अली 8084. और कोई है साहब? Is that the final one? महाराष्ट्र सरकार दो मुंह वाला सांप है. MN Islam 1985. Right. Thank you very much. That is politically colorful as usual. Please do send in your comments, as many as possible, and do subscribe to the channel if you haven't done so already. We'll of course be back with you tomorrow. Just after the show, you will watch that absolutely heart-rending story on what has happened in Santa Cruz East. People living in the same houses for the last 60 years have suddenly been dishoused, their houses demolished. It's terrible. It should not happen to anyone at all. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं. शो के फौरन बाद आप देखिएगा प्रदीप जी ने स्टोरी करी है, and it is heart-rending. That's it. That's all we've got for you आज के शो में. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.